हम जो एक दूसरे को कभी कभी उंगली उठा के ना अपने वो करते हैं कि वो ये बाहर का है, बाहर का नहीं है, वो हर कोई 2000 साल से यहाँ पे है, यू नो। तो कहते हैं किसी भी बच्चे को उस उम्र के 700-800 शेर आते थे जिस तरह हमें गाने आते हैं. Second most watched thing are animal videos. Certain teachers bring history to life, you know, like for you. My next guest is a person I've met in different phases of my life. मैं पहली बार देखा जब मैं स्कूल में कॉलेज में था और टीवी पे देखा था. फिर मैं यूनिवर्सिटी गया, फिल्म पढ़ना था, तो एक दिन इन पर्सन आए, जज की उन्होंने हमारी शॉर्ट फिल्म्स, और फिर मैं उनको बाद में मिला फॉर वर्क. देन आई मेट हिम सोशली एंड वी ऑल्सो चिल्ड. सो आई मेट Mr. Faizan Haqqee, a voice and a face that you will not forget if you have not been living under a rock. Then in Pakistan, for sure, you know him as he's the most, I think, recognizable voice for sure, 110%. And it's not just the voice, it's the work ethic, it's the discipline, and it's just being an amazing guy. And thank you for that. Thank you so much for that introduction, man. Yeah. Thank you so much. That was really sweet of you. It just came out. What I didn't plan I would it. say it the same way. I've seen you through different phases of your life. Yeah. I've seen you as a student. I've seen you as a star. I've seen you. But the beauty of it is this connection has been. Yeah. Because I've known you as a person. I've always seen you as a person throughout it all. You know, whether I've seen you in a video or at college, you were always a person who had a certain energy. Yeah. And that's what I remember, and that's what I associate, you know. And do you think कि ये क्योंकि कहते हैं ना कि not to toot our horns, but जब एक you know, when you are good, you see good in others, and when you are you are, you know, so you know, certain kind of people kind of always know. मैं कभी when I see someone who reminds me of myself, I look at that person, I'm like, yes, for somehow I can see him through the... Because you're partly that person also. Yes. A part of you is like that person. Yeah. And that's why we identify with them. That's why I identify with Sufism, because it's also a concept of oneness, that there's God in you, there's God in me, there's God in everything, there's God in the cat, there's God in everywhere. Part so we must energy. love. Yeah, we're all the same. Yeah. Same vibration, man. Yeah. You know? No judgment there also. Because you in Sufism, you'll never see a Sufi judging someone else. It'll be everyone's love. No, I love that spirit, That's something we need, for sure. I love that spirit, and I think it's always been there. That Sufi spirit has always been there. In your life? In humans. What about you personally? Personally, मैं कोई लेबल लगा के ये नहीं कहूँगा. You can skip this. क्यों नहीं यार, ये अच्छी बात करनी चाहिए. Because it's an attractive idea. Yeah. Whatever's trickled down to me through Sufism and Sufic teachings is wonderful stuff. Yeah. और उसका connection आप देख सकते हैं, वो सिर्फ Sufism के शुरू से नहीं हो रहा वो. Right. Buddha was also a very Sufic person. So was Xuanzang of China. So was you could say कौन है Chinese, वो जो the ultimate Chinese philosopher, what was his name? Confucius, Lao Tzu, same kind of guys, you know. Yeah. कहीं भी देखो, हर civilization में तुम्हें ये बंदे मिलेंगे. हर ज़माने में थे, you know. Thinkers, you would say. Philosophers, expressors, you know, storytellers, and humanists. You know, हर दौर में थे, और हर दौर में अपने तरीके से कोई revivalist movement चला रहे थे. Guru Nanak भी वही चीज़ थे. In fact, Guru Nanak was very inspired by Sufic teachings. You know, ग्रंथ साहिब जो है सिखों की किताब, उसमें बहुत सी शायरी मुसलमान शायरों की, सूफी शोरा की शामिल है. That's something to be proud of, and then to that's, you know, something to stay connected to. Yeah, you know? For sure. Those energies, common those ground. people who were selfless. Yeah. What's better than that? Nothing. And God is God, regardless. You call him this, you call him that, or you call whatever he has energy. A stamp on all of us. Yeah, you know? it's we can have different names for him, but he has the same name for us, and it's creation, and we're all from him. You know, so yeah, I don't doubt that. Without knowing too much,
without claiming to have studied it. I don't think you have to. I think it's like saying I want to study about my mother. It's like God is Experiential you. also. Yeah. And he's in you. You're part of him, and so you can't really don't really have to study to have a belief. I feel that's where faith comes in. तुम जो भी थिंकिंग करते हो, जो भी एक्शंस करते हो, वो उसी इलेक्ट्रिसिटी और उसी एनर्जी के साथ, उसी एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ करते हो जो उसने तुम्हें दिया है. Yep. ठीक है. So you can keep the names any way you like, but you can't deny the energy that you are a part of. Definitely. Yeah. Damn, हम काफी intense से मैंने शुरू कर लिया. I will let's That should be part of the common discourse, नहीं? Yes. ये बातें एक जमाने में लोग पता है करते थे. Yeah. पिछली सदी में दिल्ली का जो कल्चर कहते हैं बड़ा मशहूर, दिल्ली के बाजारों में जो कल्चर होता था, उस दौर में जो पढ़ा लिखा नहीं भी होता था ना, वो शायरों को कोट कर सकता था, वो बहुत सी आयतें जानता था, उनकी ट्रांसलेशन ज़बानी उसको पता होती थी. मेरे दादा बताते थे कि उनकी जब वो 7, 8, 10, 11 साल के थे, तो कहते किसी भी बच्चे को उस उम्र के 700-800 शेर आते थे जिस तरह हमें गाने आते हैं. So उस वक्त का पॉपुलर कल्चर ये था. डिस्कोर्स जो था वो एक बड़ी आम पॉपुलर कल्चर था. पॉपुलर कल्चर था. और आप अगर पुराने इलाकों में और पुराने लोगों में देखेंगे ना, तो वो आपस में जब बातें करते हैं तो a lot of it is just allegorical, a lot of it is just philosophy, that's been passed down. Yeah, it's not never like तुमने ये शो देखा था या तुमने ये गाना सुना है. अपने ज़माने की बात है. अपने ज़माने की बात. पर देखिए वो ज़माना था जहाँ पॉपुलर कल्चर था to talk about discourse, to talk about society, to go into poetry, and now it's more about conforming into a certain thought. And if you think like that, you'll get the retweets. If you think like us, if you dress like us, you're accepted. If you're different, if you have different beliefs. Well, in our times, sadly, one of the disadvantages of our times, aside from the easy communication and all that, and the exposure that everyone gets now that they didn't get before, one of the downsides has been that everyone has been homogenized. हर कोई एक जैसा ही है. तुम भी सुबह को उठे, तुमने वो वीडियोस देखे, वो उसी चीज पे हंसे, मैं भी उसी पे हंसा, मैंने भी वही गाना सुना, और फिर आके उन्हीं चीजों की बात करी. मेरे बचपन में जब 4 लड़के बैठते थे ना साथ, तो सबका बैकग्राउंड, सबके माँ बाप, सबकी टीचिंग्स ही कुछ और होती थी, और सारे अलग होते थे. हर कोई नया अलग म्यूजिक ही लेके आता था आपकी लाइफ में, और अलग किस्से, अलग मोहल्ला, अलग डायनामिक्स, तो अब इतना ज्यादा फर्क रहा नहीं. आप एक शहर से दूसरे चले जाएं, लोगों का एक्सपोजर वही है, रफली वही है, ज्यादा है मगर गहरा नहीं है. किसी भी चीज की गहराई में लोग अब नहीं जाते. Just headlines पढ़ी और बट ओपिनियन फॉर्म कर लिया. Mostly, 3 videos and I know the subject. It seems right. Tell me about being famous in the time of indus music and being because that was one of the first private channels that came out in Pakistan. तो हमारे पास उससे पहले STN and NTN होते थे, और NTN STN के बाद फिर अब एक इंडस म्यूजिक और इंडस ये आया चैनल, और that's the first network, और उसमें आप VJ हो गए, और आप माहिरा खान और अनुषे और आयशा उमर और सनम सईद सबके साथ ये थी. and you're doing these shows, everybody knows you. How was that? How was fame? Because I've experienced overnight fame, but in this day and age of internet, but I'm curious about that. I didn't experience it overnight. Okay. Thank God it's been very gentle throughout. Never felt famous like that. पर वो तो हुआ होगा कि पहली बार किसी ने बोला होगा. यार 1997 में मैंने अपना स्टार्ट लिया था. The winter of 96 actually. Okay. पता लगा था कि कॉलेज नहीं जा सकते, वो अमेरिका जाने के पैसे नहीं थे. मैंने कहा फिल्म मेकिंग नहीं पढ़ सकते तो यहीं पे सीखेंगे करके. ठीक है. तो उस जमाने में दोस्त ऐसे मिले जिन्होंने करा दिया कि वॉइस ओवर करो और टीवी पे आ जाओ, म्यूजिक चैनल भी है. तो मैंने 97 में स्टार्ट लिया था, बिफोर इंडस म्यूजिक हैपेंड. दैट हैपेंड इन 2001. तो मैं उस जमाने में STN वाले जमाने का हूँ. ठीक है. मैंने स्टार्ट उस टाइम पे लिया था व्हेन फखरे आलम लेफ्ट म्यूजिक चैनल चार्ट्स. I joined. I replaced him. Okay. He had gone on to become Pepsi boy. Then I went on to become Pepsi boy. And I got into advertising. Spent 4 years there. And then Ghazanfar Saab, my original boss who had put me on TV in the first place,
said, "Beta, I'm launching a music channel." I said, "Sir, music कहाँ है?" कहते वो आ रहा है। मैं कहा कहाँ से आएगा? कहते बस आ रहा है ना, तुम आ जाओ, वापस आ जाओ। मैं कहा डन। I went back to join him and Combined Productions was now Indus Music and we started, man. तो वो gentle सी transition थी, वो जब channel जब एकदम से चल पड़ा तो हमें लगा कि वो काम अच्छा जा रहा है, and then all these new people joined in and Anushe auditioned right in front of me. Early days. Aishomar came much later, Myra came even much later when we were becoming MTV in 2006. Dino आया, वो सब आए मेरे सामने की बात है, you know. So we just started working and hit the ground running and nobody had time to think, oh, we're famous, you know. Yes, music was the number one watched thing in those days, like drama and news now. बिल्कुल। टेररिज्म के दौर से पहले हम मौसीकी सुनते थे, हम घर जाते थे, इंडस म्यूजिक लगा देते थे कि यार वो जो गाना आज बड़ा अच्छा आया था ना, वो आ रहा होगा टीवी पे, वो आवाज का जादू का चिराग आ रहा होगा, ये मेरा जैम होता था, जादू का चिराग। 96, 97, 98 time. Yes, that was good. So ठीक है, so didn't really experience, we were too busy to experience and to even sit down with the thought that we're famous and this is what it means, but I'm sure पहचानते थे, अच्छा लगता था। But and it did, like, was there a fun story to it? Maybe some fame story where you got invited? I don't remember it right now. Like, I remember one day I just rang a doorbell of a random apartment because loud music was coming from it and it was good music. And I said, hey, my name is Gul Pir, can I come chill with you? And they said, yeah, we know you. And then I just went and partied with them. That's nice. In Karachi. So I mean, that seemed something like that, something. I can't remember it right now. Incidents मजे के होते हैं, interesting लोग मिलते हैं। Right. सखर में गाड़ी जगह मैं लाहौर तक ड्राइव कर रहा था अकेले, तो गाड़ी में कोई मसला हुआ, उधर कोई बंदा लाइक एन एंजल आ गया, उसने मुझे कोई रिंग भी पहना दी। मैंने कहा यार ये कोई तो ज्यादा हो रहा है, यू नो, क्या मतलब रिंग भी बनाती है, तो उसे कोई रिंग भी दे दी कि मेरे मुझे याद रखना। एंड आई किड यू नॉट, कई सालों के बाद सखर में ही रुका, कोई खाना खाने रुके थे कहीं और वही बंदा मुझे दोबारा मिल गया, यू नो। उसने बोला भाई and he's like, hey, have you taken care of the ring? Said yeah, I've kept it somewhere, you know. But anyway, interesting things happen from time to time. अच्छे लोग मिलते हैं, but because I'm not wildly famous and I'm not like some chocolate hero, तो मुझे वो वाले फैंस नहीं मिलते जो अली जफर को मिलते हैं। अब वो नहीं मिलते। मुझे वैसा तो था कि हाँ, you know, I've seen you and but nice. I feel like the bro, when you're a bro, no, then you get more access. You get more respect, baby. Respect was more like, you're not like okay, यार ये बस pretty boy or whatever, you know. ऐसा तो है नहीं, nobody has a crush on you, you know. तो पता है ना. So they're not meeting you because they're crushing on you. They want to say hi. Work. They've seen something nice. Yeah. So they respect your work. They're looking at your work. They're not looking at. नहीं करना चाहते हो. You know, उस तरह के लोग. Yeah. So अच्छी बात है. So now you're doing a car related show. When did you get into cars? When or what was as a child? As a child. बचपन से शौक था. Why? Did you watch Knight Rider or what? Even before that, yeah. गाड़ियाँ पसंद थी. मैंने एक दिन रोड पे पोर्शा देखी. और मैंने घर कहाँ पे? कराची में, 80s में. मैंने घर आके पूछा, मैंने कहा ये पोर्शा क्या है? You know, and my father said, ब्रिटानिका निकालो, encyclopedia थी घर में, क्या वो निकालो, उसका P section लेके आना, उसमें देखते हैं. He basically told me a German car, sports car, but let's find out. Old way of saying Google it. Basically, old way of saying Google it, जो कि मैं बहुत करता था, उन्होंने आदत डाली हुई थी. Thank God he did that, क्योंकि अपने सवाल उनके जवाब ढूंढने का एक तरीका मिल गया. तो क्या करते थे वो कि किसी भी चीज़ का शौक होता था मुझे, तो लाके उस चीज़ के बारे में मैगजीन्स और किताबें में मुझे just used to make them available. तो कुत्तों का शौक हुआ, encyclopedia of dogs आ गई. तो कार मैगजीन्स आने शुरू हो गए पोर्शा की वजह से. ठीक है. एंड देन फरारी, लैम्बोर्गिनी. और ये कौन से मैगजीन्स की बात, मतलब रोड एंड ट्रैक, ऑटोमोबाइल, कार मैगजीन, ब्रिटिश, रियली गुड. दिस इज ऑल वे बिफोर टॉप गियर, यू नो. तो बस उससे शौक हो गया था. फिर मैं गाड़ियों में, आप वो बच्चे थे जिनके कमरे में वो गाड़ियों की पोस्टर लगे? मैं वो भी नहीं था, मगर मैं वो बच्चा था जो कि जब पेरेंट्स रेस्टोरेंट में कहीं खाना ऑर्डर करते थे और बैठे हुए वेट कर रहे होते थे, तो मैं बाहर जाके जो गाड़ियाँ कोई इंटरेस्टिंग खड़ी होती थी ना, उनके जाके स्पीडोमीटर में झांकता था,
मतलब जहाँ के उनकी स्पीडोमीटर देखता था कि ये मैक्सिमम टोयोटा क्राउन है कितनी जाती है, 220 जाती है, वाह. फिर मर्सिडीज बेंज में देखा 240, I was like, oh man, you know, मर्सिडीज बेंज. So वहाँ से छोटी छोटी चीजों से शुरू हुआ. What was your dream car back then? My first dream car was probably the Lamborghini Countach, which I saw in a chewing gum का sticker नहीं होता अंदर. उससे मैंने देखा, मैंने कहा, oh my god, what is this? But what color was it? Yellow? It was red. Red. Yeah. Even फिर वो Cannonball Run में वो देख ली मूवी में. But even before that, the first car crash was मेरे घर के सामने ओमान कॉन्सुलेट होता था और कॉन्सल जनरल की ब्लैक Mercedes S क्लास आई थी 280S. Oh, which year is this? This must be 1983. So 1980s की थी. 4 years old, 5 years old, and I was just in love with that car. Every time it went in and out of that gate, I used to be mesmerized. S class का अपना सीन है. अपना scene. Can't और उस S class का W126 का तो कुछ और ही scene है. हाँ, nice. Still my favorite car. Anyway, How much would you get that car for right now? Have you looked? really good condition. Have you looked? Have you found? I look probably every week. मैंने एक आध क्लब्स ज्वाइन किए मैंने Facebook, Instagram पे. Inside which of are this just car? which are just about that model. Yeah. तो कभी कोई बहुत अच्छा राइट हैंड ड्राइव नजर आती है तो मुंह में पानी आता है. हाँ. सोचते हैं यार कितने पैसे हैं इस वक्त, हो सकता है कैन आई अफोर्ड. And ऐसी गाड़ियों को फिर वो मेंटेनेंस भी वो पूरा एक इट्स अ लॉट ऑफ. यू वुड लाइक टू गेट वन जिसमें मेंटेनेंस पहले सारी हुई हो ताकि आपको कम करनी पड़े. But it's a far-fetched dream right now to have those things imported into our country. You can't import a car older than 3 years or 5 years right now. Why? That's the law. Why? What is the sense of? Do you think there's any logic to any of this? Do you think there's any logic? It's none. All this. I also saw a vlog where you interviewed that guy who drove from UK to Pakistan, and I mean, he was quite. It was quite sad how he was talking about how Pakistanis come just leave their car, and then that's why it gives us a bad name. कौन सा बुरा काम नहीं होता यार. Yeah. Yeah. सारी अब तो पता लग गया ना, सारी बुराइयां तो है. हाँ. So what makes you stay patriotic? I don't know if I am. Okay. I mean, patriotism always seemed like a pretty trite emotion, Yeah. Or मतलब nation states at the end of the day are a political thing. Yeah. They're not a human thing. Yeah. That's not a human made thing. Yeah. thing, and it's political. So how much can you feel for that? Yeah. So are you saying that be a logical citizen who abides by the law of the land and take care of yourself? That's it. Yeah, that's what every insignificant hippie does, right? Just says, yeah, I can't change it. Yeah. Let me abide by the rules of where I am. And let's not offend anyone, But do you get annoyed? I'm sure you get annoyed sometimes. By what? When you accept, oh, this is how it is, okay, whatever. But then sometimes it gets to you, right? So then what do you do? It does. What do you do? What is your coping? I look so serious in this interview right now, because you got me thinking about that stuff, Yeah. And I was thinking about it before I got here on my way as well. Oh, really? What happened? Things aren't good, are they? Yeah. Things are very good in my life, thank God. But you can't. हम वो लोग तो नहीं है जो अपने आइसोलेट होकर अपनी घर 4 दीवारी के अंदर समझे कि चीजें बड़ी अच्छी हैं. Yeah, I tried to, but it's not possible. It doesn't work. It doesn't work. I don't have cable TV. That helps me. I don't have it in my room either. Okay. In my मैंने टीवी नहीं देखा कुछ 2009-10 से मैंने टीवी नहीं देखा. Good. Thank God. रेगुलरली तो नहीं देखा. कमरे में मेरे टीवी नहीं आता. Yeah. What I choose, I see. Yeah. You too? I don't have cable TV in my apartment. I just don't have that. Because I just read the news on Twitter, or I'll go to a website of a publication. Yeah. For a world view, मेरी बड़ी बचपन से आदत है BBC का पेज खोल लेता हूँ. Yeah. और वो भी इतना biased और इतना ज़्यादा propaganda पेज बन गया कि वो उसको खोलने का दिल नहीं चाहता. But just to get a sense कि कौन किससे लड़ रहा है, कौन किसकी लाइफ. I feel like now if you're on Twitter and you follow all these big 5, 6, 7, 8 publications, तो आपको पूरा left and right and सारा view मिल जाता है. But I think
आपको आई थिंक उधर दुनिया की जो लड़ाई चल रही है ना आपस में वो नजर आती है ज्यादा. ये भी है. You know, you don't, that doesn't inform you. Yeah. It just shows you who's fighting who and what Yeah. everybody's got, you know, to say. एक ज़माने में डॉन अखबार पढ़ने से एक बड़ा अच्छा जनरल ओवरव्यू मिल जाता था दुनिया का. Now everything is politicized. Every Yeah. TV channel you watch is politicized. You know? True. No one is seeking fairness, I think. Yeah. You know, and public भी ऐसी हो गई है. You know, influence हो जाते हैं ना लोग आसानी से. Yeah. They've been molded, so they don't know what's They're better used to it. either. Yeah. Okay. So how does it feel when you're working, like when you were working back then, the late 90s, early 2000s, and now when you work, especially the medium has changed, like internet versus TV. How do you feel is different? How do you feel it is different for you as an artist? Yeah, for me, because I never really did one thing. तो मैं कभी सिर्फ टीवी पे आने वाला बंदा नहीं था. मैं लिखता भी था हमेशा से. Right. मैं कभी रेडियो भी कर रहा होता था. कभी मैं फिल्म रिव्यूज कर रहा होता था. तो my weight was distributed between voiceovers and TV, so I didn't always have to be on TV. जब म्यूजिक चैनल्स मर गए तो मुझे ये नहीं था कि वो मैंने टीवी पे आना है. बहुत से दोस्त जो हैं वो ड्रामा एक्टर्स बन गए. बहुत से दोस्त जो हैं वो सियासी तज्जिया निगार बन गए. एंड गुड लक टू एवरीवन हु डिड वेल एट इट, राइट. कोई सिंगर बन गया, अच्छी बात है. मुझे लगा कि मैं वही काम करूंगा जो मुझे आता है, जो मैं कॉन्फिडेंटली कह सकता हूँ कि मैं कर सकता हूँ. सो योर क्वेश्चन वाज coming to that, the internet era work and the TV era. It made life easier. I didn't have to go somewhere every day. Yeah. मैं घर से बैठ के मुझे स्क्रिप्ट आता है व्हाट्सएप पे कि फैजान ये बैंक के 2 एड्स हैं, 30 सेकंड 15 सेकंड ये दोनों कर दो. मैं कहता हूँ इतने होंगे. कहते हैं ओके, कोड एक्सेप्टेड, रिकॉर्ड. I go to the other room, it's set up like a studio. I put on my headphones and I record as many takes as I need to until I hear it the way I want it to hear it. Then I take that SD card, put it in the phone and send the files on WeTransfer. So it's made my life much easier. कोई नाना नहीं पड़ता किसी से मिलने के पहले. You know, आप काम करके 10 चीजें दिन में करके बेच सकते हैं. More productive. More productive, less wasting time having tea and. Go there studio shop. शानी के स्टूडियो पहुंचो यार, वो रिकॉर्डिंग घंटा बातें करो. घंटा बातें करो. कैसा ब्रो, क्या चल रहा है, सब बता रहा. अच्छा यार, वॉइस ओवर करने में जाना है. हाँ, माहौल तो मिस करता हूँ. पहले वो ज्यादा होती थी चीज, मगर अब भी हो जाती है. जब कभी लिप सिंक करना होता है ना एक्ट में, तो फिर सब मिलना पड़ता है. उसके लिए आप जाते हैं और कोई तोहफा भी लेके जाते हैं. यार बड़े दिनों से नहीं मिले, यू नो, here's for you. आज तुम्हारे लिए USB पे म्यूजिक लाया हूँ. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. तोहफा मुझे भी मिला. So what is it? What do you think of doing in the future? Is there something interesting that you're doing or you want to do? यार पार्क व्हील्स के साथ कार्स से रिलेटेड तो बड़ा इंटरेस्टिंग काम मुझे करने का चांस मिल रहा है ऑलरेडी. सुनील मज is an awesome guy. I got in touch with him out of the blue. मैंने कहा यार बचपन से गाड़ियों का शौक है, यही रिसाले पढ़े और मेजबान भी हूँ, you know, तो थोड़ा सा इसका ढंग जानता हूँ. उन्होंने कहा है आप कराची में नेक्स्ट टाइम आता हूँ, मिलते हैं और करते हैं. और फिर कर लिया, you know, और he's been really cool. That's great. उसने कहा कि बंदे को शौक है और करना चाहता है, come on, you know. And recently एक एपिसोड दुबई में शूट करके लाया, उसमें सुपर कार्स थी और nice. So you know, I feel that world opening up nicely, and hopefully we'll take our viewers to Le Mans races, to the Dakar Rally, to Formula 1 races, to car shows, which happen around the world. So yeah, the future is looking good in that way. Nice. उसके अलावा historical documentary series मैंने एक लिखी है, कोई 3-4 साल लगाकर. ठीक है. Hopefully कोई माहौल अच्छा होगा, थोड़ा सा बेहतर होगा. So hopefully one will get funding to actually put it out there. It's a 6-part series. And it's Pakistan history. It's our history, the people of the Indus Valley. Okay. Which we have been since the beginning of time. So right from the first Africans migrating to the Indus Valley 80,000 years ago, you know, walking along the Arabian coastlands and coming over to the Indus Valley, finding the monsoon, discovering it for themselves, discovering these alluvial rich, mineral rich rivers which flow down to the ocean. And this is where settled life probably began, you know. So it's from that period to the present day, a 6-part series which tells you the story of the Indus Valley. Indus Valley. Wow. Because it's never really been told. अगर आप इंटरनेट पे कोई एक चीज ढूंढना चाहे ना कि हमारी 80,000 years की हिस्ट्री बताओ, वो नहीं है.
वो आपको कहीं कहीं उधर उधर से जोड़ आप या तो इंडिया के साथ लंप हो जाते हैं. Yeah. India is a big region. Yeah. It's not fair to think of us as part of just a big region. Yeah. Yes, that has its history which affected us, but we connect India to the rest of the world. Central Asia, China, Russia, the Middle East, Persia, Europe, Africa. हाँ. क्या रह गया? Yeah. इस तरफ समंदर है, ऊपर हिमालय है. India had no contact with the rest of the world. It was all through what is today's Indus Valley. चाहे वो चित्राल और काराकोरम के passes हों, या वो desert areas हों, जो कि कनेक्ट करते थे हमें ईरान से या अफगानिस्तान से. मतलब कितनी सिविलाइजेशन से हमारा कांटेक्ट रहा है थ्रू आउट हिस्ट्री. हम जो एक दूसरे को कभी कभी उंगली उठा के ना अपने वो करते हैं कि वो ये बाहर का है. बाहर का नहीं है वो, हर कोई 2000 साल से यहाँ पे है, कम अज कम. So we share the same lineages. Our gene pool overlaps. It's a very interesting tale that is worth understanding deeply. And I feel like such programming needs to happen. We need to start educating and entertaining. Yeah. And it can be done with great content. And we don't have to look far, like you said, like we just have to look back into our own history. And have the lessons there so people can learn. Because कहते हैं ना कि history repeats itself, and I feel like अगर हमें पता हो ना कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है और कैसे हमें रूल किया गया, तो हमें बहुत पता चल जाएगा, मिलेगा उससे, and we'll know how not to make the mistakes of the past. Yeah. But because we don't know our own history, we have to learn everything from foreign books. True. We have to learn everything in a foreign language. Yeah. We're doing this interview in a foreign language right now. Yeah. Unfortunately. Yeah. Because we're reaching out to a certain audience that cares about these things. Yeah. We'll hear this discussion. Otherwise, most will have flipped already. Right? बिल्कुल. तो अनफॉर्चुनेटली तुम और मैं जब कोई सेरिब्रल चीज किसी के पास लेकर जाते हैं तो हमें बताया जाता है कि यार ये तो कोई देखता नहीं है. ये कौन देखेगा. बट मुझे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज रिसेंटली आई फेल्ट वेरी एनकरेज्ड बाय इट. मुझे किसी ने टेलीकॉम इंडस्ट्री में बताया कि द मोस्ट वॉच्ड थिंग इन द रूरल एरियाज ऑफ पाकिस्तान इज, जो लोग अपने बच्चों को फोन नहीं दे देते एंटरटेनमेंट के लिए, कार्टून तो देखते हैं बच्चे. सेकेंड मोस्ट वॉच थिंग आर एनिमल वीडियोज. जो नेशनल जियोग्राफिक टाइप की राइनो है, उसका बच्चा वो किस तरह से बेयर उनको हिल से नीचे लेके आ रहे हैं, चिड़िया किस तरह से अंडा तोड़ के बच्चे को निकाल रही है, वो चीजें देखने में लोगों को बड़ा मजा आता है बच्चों को. सो आई फेल्ट एनकरेज्ड बाय दैट. आई सेड science and history should appeal to them. It used to appeal to me as a kid. They should be like like why can't they dub like that, those in Urdu and other languages. वो डब हुए हुए जो इंडिया के डब हुए हुए जो होते हैं वो बच्चे बहुत शौक से देखते हैं, उनको समझ आ रहा होता है कि क्या हो रहा है. Nice. My father brought science and space and the universe to life for me in a very interesting way. उन्होंने लैंप जलाया किचन के अंदर एक दिन, और लैंप जलाया और बलून्स छत से स्कॉच टेप ऊपर छत पे लगा के डोरी से बलून्स डिफरेंट साइजेस के बांध के प्लैनेट्स बनाए, और मुझे दिखाया गया सन से लाइट आ रही है और सबसे दूर कौन सा है प्लूटो, देखो उसको लाइट सबसे कम मिल रही है, वो बहुत ठंडा है. इस तरह से it came to life for me. I could always understand them like that. Makes all the difference, right? How you bring something to life. For certain teachers bring history to life, to life for you. Certain people make English interesting, and there's that odd teacher who sometimes makes maths interesting. तो होता है, और वो भी टीचर होता है जो आपके लिए उर्दू इंटरेस्टिंग बना देता है. बिल्कुल. Thank God I've had that. Who made Urdu interesting for me. हमारी उर्दू की टीचर तो बहुत स्ट्रिक्ट थी, मिस बुशरा. मारती थी भाई, हम बहुत डरते थे. पुराने जमाने में बहुत से टीचर मारते थे. ये भी होता था पहले, चंबा प्लेटी हो जाती थी. ये कम से कम हाथ में रूलर तो पड़ ही जाता. At least, yeah. But yeah, cool discussions. That was pretty nice. It went in. We talked about the industry. We talked about. Will we make people sad with this discussion? No. I think we need to make people think and also make them, question their beliefs. One thing I feel really, when I was younger, I used to feel excited to talk about things that I used to know. कोई नया लफ्ज़ सीखा है तो वो बोलने में मजा आता है, उसको यूज़ करना है आज. बिल्कुल. कोई नया historical fact सीखा है तो उसको आज बताना है. But having grown up, I mean, I'm much older now, and I feel कि कोई भी topic
स्टार्ट कर देना और उसको समेट के खत्म ना करना was ज्यादती with people. It is, and we're guilty of that all the time. Yeah. We start a discussion but we don't really take anyone anywhere. हम अपना laments करके बात खत्म हो जाती है वहीं पे. But that is I do feel I feel like I want to do a version where I want to do like a 1 hour, 2 hour type of thing, because I feel like, and sometimes I also feel like injustice ke a lot of these conversations have to stop midway because we're locked to a certain duration. But maybe, but we can always sit down and continue this again. I hope that your podcast and whatever I try to do in that domain, I hope it becomes and it grows to become a more educational platform. Of course. Than we get to be right now. That's the beauty of it. Like every guest brings in his own or her own vibe, and we so some are here, some go informative, some go other ways. So everyone teaches us something. That's what it is all about. But thank you so much. Thank you for having me, man. Yes. Many congratulations on your wedding. I hope you're having a great time. Yes, I am. And wish you all the best for the car shows. I really love all the episodes. I look forward to each episode. Keep doing them. Thank you. Take care. Take care. Bye-bye.